is a ride-hailing app, and we are based in California. And the app is present in across 700 cities across 48 countries. India being one of a very important country for us. We are number 2 ride-hailing app in terms of number of downloads. This was a survey which was done by App Annie, and this was 2022 that we did a survey. That the survey was done, and it was found that InDrive was number 2 ride-hailing app in the world. Like if you talk about InDrive, it is very different from other ride-hailing apps in the world, in the country. We have a very fair and transparent model. So basically, for InDrive, we give the complete power in the hands of our drivers as well as our passengers. So there is a freedom of choice for both passengers and drivers. So when we talk about passengers, InDrive, basically when a passenger tries to book a ride from point A to point B, they decide how much fare they want to pay for that ride. And it is not a fare that is automatically set by us, but yes, we do give a fair estimate of the fare that should come. Below that, the app will not take it, but above that, it will. So we recommend people going with that cost estimate. And for the passengers, for the drivers, if they think that the fare that the passenger is quoting is very less, they can increase that fare and share it with the passenger. So basically, they can negotiate the fare, both the passengers and the driver, at the platform itself. So the passenger has the freedom of choosing the driver based on 3 important things. One is estimate time of arrival, how much time the driver is going to take. Number 2 is the car model, which car, like sometimes here you can choose whether you want to go in a Wagoner, a Swift Desire, or whichever car. And number 3, which is a very important point, is driver's rating. So a lot of time we talk about safety, right? Like being in a ride-hailing industry, safety is a very important thing. So especially for female passengers also. So when we are taking a ride, we should always encourage our passengers, please consider the driver's rating. So if you think there is a driver rating is less, though we will also take action on your behalf, we ensure that there is no drivers with less rating in the app, but just in case you find, to always try to go with the driver which has a better rating. So there is no price manipulation in the app. Because the price is being set by the passengers and the drivers, we do not have, there is no surge pricing in the app. Today's traffic, so the price will increase, or there is sudden high rainfall and the price will increase. This will not happen in InDrive. Our service fee that we take from our drivers is comparatively very less. The max that we take across the globe is 9.99, and we do not go above that. So it means that we are always under 10%. The other thing is safety. So we are in an industry like ride-hailing where we have to ensure the safety of our passengers as well as our drivers is there. So we try our best to make sure our platform is a safe place for both the passengers and the drivers. We have certain features like ride sharing, where they can share the ride with the passengers and the drivers. They can share the ride with their family, friends, their trusted ones. The other one is basically is our customer support. We have a very active customer support team. So 24/7, which is active. The passengers and drivers can reach out to us through our customer support. And the third one is SOS button, with which, God forbid, if there is any mishap that happens, they can reach out to the local police with the help of the SOS button. And talking about our whole model, fair and transparent model that I just spoke about, we've seen that InDrive has really grown. We launched in 2019 was the first city when we launched in Chandigarh. Since then, our app has really grown. And the way we've grown is, yes, we have done a lot of marketing activities which we'll share later. But apart from that, the main factor of our growth of our app is word of mouth. We've seen drivers asking their other fellow drivers to download InDrive and use InDrive because of the high rate of income that they are earning through InDrive, and passengers spreading the word because they have to pay comparatively very less at InDrive because of our model. Italians here, last year we have launched in the market. So
Currently, the role vertical we have in our app, which is cab, auto rickshaw, and moto. Apart from that, we also have introduced intercity, freight, and courier. The interesting fact we realized after COVID that the 51% of drivers, their age group was between around 25 to 30. And I think this is a more interesting fact to empower, the new age group in India. Earlier, it was around like most of the drivers, they were around like 40 to 45. And since COVID, I think the more and more drivers interested in, the ride-hailing app to earn money for them. So ये concept सारे को सब लोगों को अच्छा लगा. Then currently like we have thousands of drivers जो कि InDrive को use कर रहे हैं on daily basis और एक अच्छी कमाई कर रहे हैं उसमें. And InDrive पैसेंजर से कुछ भी चार्ज नहीं करता है. Like हम लोग सर्विस फी चार्ज करते हैं as aggregator जो कि like मेरे फ्रेंड्स ने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है that 9.99% है and we are not going above 10%. And also जो हमने ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया है, लिबर्टी प्रोवाइड की है कि पैसेंजर्स अपने ड्राइवर चूज़ कर सकते हैं, ड्राइवर्स अपने पैसेंजर चूज़ कर सकते हैं. तो ये दोनों को ही काफ़ी पसंद आ रहा है. एंड इसकी वजह से हमारी जो कैंसिलेशन है, राइड कैंसिलेशन, वो हमारी ज़ीरो है. So basically taking care of all the marketing activities and initiatives for passengers and drivers that we have on our app. I'd like to present the 360 marketing campaign that we have recently done in India, in two big cities of India, Delhi, NCR and Mumbai. So the main message that we had is ride for a fair price you both agree on. So now what does that mean? It basically means that उसी किराए पे सवारी करो जिसमें आप और आपके ड्राइवर दोनों सहमत हो. Because we really believe that in India it has been a pain point where passengers always feel fair price you both agree on. But this is connect for all business models. Like for example, Bhavit can share details about university. Okay, what about university? If we see unfairness in the market, and if we can solve this problem, we can make developing for that. Really, this is our problem. We are more focusing on people, and our real big message for our market, people driven. This is very good insight for the future because we need to make social programs, any social programs, all ride-hailing services more focusing on profit. But we are more focusing on social events, social programs, and training. And we are working in all world. And for example, now we are developing India. Why I am in India now? Because for us, really, for us, India, this is the first market for the next year for developing. Really, this is our current target for the next year. Developing ride-hailing services, any services like intercity mode, couriers mode, cargo mode, freight mode, and any. And we need to focusing on social programs, on challenging injustice. This is our message for the market. Thank you so much. पावर पैसेंजर्स और ड्राइवर्स दोनों के हाथ में है. ड्राइवर्स के लिए ऑटोमेटिकली राइड असाइन नहीं होती. ड्राइवर्स को पता होता है पैसेंजर्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं और कितने ड्राइवर सर्च प्राइसिंग नहीं होती है. दूसरे ड्राइवर्स पैसेंजर्स को अपना जो फेयर है पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है तो वो खुद अपना फेयर डिसाइड करते हैं. वो हम उनको लाएगा तो ऐसे तो कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि वो वेट करने के लिए 20 रुपए बचाने के लिए उसे कितना वेट करना है. तो ऐसा लगता है कि ये थोड़ा मतलब अन्याय हो जाएगा. ये आपको लग रहा है कंफ्यूजन होगा बट बिल्कुल नहीं होगा. आप एक बार InDrive यूज करके देखना, आपको खुद पता चलेगा. इट बहुत कन्वीनियंट और बहुत इजी है. पैसेंजर्स को भी, हमें भी पता होता है जैसे हमें आना है क्या, क्योंकि हम भी हर लोग को पता होता है कि कई बार 5 साल 10 मिनट ड्राइवर लगा देते हैं आने में, तो हम उतना मार्जिन लेके ही चलते हैं. सो जनरली जो आपका ऑप्शन है टाइम, तो आप टाइम मत देखो, पास वाले ड्राइवर ले लो. तो आपको लग रहा है कंफ्यूजन, पर वो कंफ्यूजन है नहीं. जब आप वहाँ पे ऑप्शंस देखोगे ना, जो बिड आती है कि कोई 220 दे रहा है, कोई 200 दे रहा है, कोई 230 दे रहा है, तो वो ऑप्शंस में आप खुद ही अपने आप डिसाइड करने में आपको और इजी रहेगा. अगर हम यहाँ से निकल के हम कई बार ऑटो बुक करने जाते हैं, सो ऑटो में आप नेगोशिएट करते हो ना, भैया यहाँ से इतने पैसे देंगे, हमारे यहाँ तो मीटर चलता नहीं है. सो वो नेगोशिएट जो आप बाहर कर रहे हो वो चीज़ आप ऐप में कर रहे हो. तो दिस इज हमारे सिर्फ गाड़ी नहीं है, बट गाड़ी, ऑटो,
ये बाइक्स सब कुछ है, सो आप उसमें चीज़ों में नेगोशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे में कार्गो भी है, कार्गो में भी आप अपना फेयर खुद सेट कर सकते हो कि आपको ये कोरियर यहाँ से वहाँ भेजना है तो आप इतने पैसे दोगे। सो वो सब ये ओवरऑल मॉडल हर चीज़ के लिए है कि आप फेयर डिसाइड करो। तो आप एक बार यूज़ करना, आपको खुद पता चलेगा, जब आपको वो बिल आएगा तो आपको वो और कन्वीनियंट और ईजी लगेगा। कई बार हमें होता है ना जो सेट प्राइस आ जाता है अलग दूसरे राइड हेलिंग ऐप से, तो हमें लगता है यार वो इतने पैसे ले रहा है, 600 रुपये लग रहा है, इतने तो पास का रास्ता है, बट वो जब आपको ड्राइवर से ऑप्शन आएगा तो ऑटोमेटिकली इजी लगेगा। अच्छा, प्रॉब्लम ये रहती है जैसे ना कैंसिल कर देते हैं, तो इसके लिए क्या मतलब कंपनी की तरफ से कुछ जो ड्राइविंग की तरफ से कि कस्टमर को या मतलब क्लाइंट आपका है तो उसे कुछ कैंसिलेशन आप कह रहे हो ड्राइवर की तरफ से या पैसेंजर ड्राइवर की तरफ से? देखिए कैंसिलेशन अगर ड्राइवर की तरफ से बहुत मिनिमल चांस है, क्योंकि ड्राइवर को हम ऑप्शन पहले दिखा देते हैं, पिकअप पॉइंट, ड्रॉप पॉइंट और उसका फेयर। अब जब आपको ये सारे चीज़ पता चल जाता है, उसके बाद तो कोई गुंजाइश नहीं है इसमें कि वो राइड एक्सेप्ट करेगा कैंसिल करेगा। ऐसा हो जाता है कि कर देते हैं फिर भी, तो इसके बाद क्या मतलब? देखिए इससे ऐसा कुछ दिक्कत तो नहीं होता, लेकिन हाँ इनका अकाउंट ब्लॉक होने का चांसेस रहते हैं अगर कस्टमर ने कस्टमर जो है हमारा पैसेंजर जो है उन्होंने कंप्लेंट करना शुरू कर दिया, तो हार्डली लाइक 4 to 5 कंप्लेंट ऐसा होता है, तो 3 आवर्स के लिए ब्लॉक हो जाते हैं या 2 आवर्स के लिए ब्लॉक हो जाते हैं। तो ये चीज़ है कि बुक कर सकते हैं, या किसी को जैसे शादी होता है, कोई अदर प्रोग्राम होता है तो वो 3, 4 भी या 5 बुक कर सकता है, कुछ ऐसा ऑप्शन है? मतलब समझा नहीं, एक ही पैसेंजर मतलब 5 राइड बुक नहीं, एक जैसे किसी का प्रोग्राम होता है तो वो अपनी मतलब और सारे फैमिली के लोग होते हैं तो वो 2 गाड़ी चाहता है बुक करना, 3 चाहता है, तो ऐसा ऑप्शन भी है या एक टाइम पे एक ही मतलब बुक हो सकता है? ऑफ कोर्स एक टाइम में एक ही होगा। एक ही होगा।